सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनर्र्थिता यतः स्वयं विद्धते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विदते भजताम अनिच्छताम स्वयं विदते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विदते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विदते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विदते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम। पढ़ेंगे प्रभु। सत्यम दिशते अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विदते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम सत्यम दिशते अर्थितो अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विदते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरार्थिता यतः स्वयं विदते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपादपल्लवम सत्यम सचमुच, हिंदी में पढ़ेंगे बाद में इंग्लिश अंग्रेजी में। दिशति देता है, अर्थितम अभिष्ट पदार्थ, अर्थितः मांगने पर, नृणाम मनुष्य के द्वारा, न नहीं, एव निसंदेह, अर्थदः वर देने वाला, यत जो, पुनः फिर, अर्थिता वर की कामनाएं, यतः जिससे, स्वयं साक्षात, विदते प्रदान करता है, भजताम
भगवान की सेवा में निरत लोगों को अनिच्छताम निष्काम भाव से इच्छा पिधानम समस्त वांछित वस्तुएं निज पाद पल्लवम अपने चरण कमलों पर। अनुवाद शिला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा हिंदी में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वह अधिकाधिक वर मांगता है। फिर भी भगवान प्रसन्नतापूर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, भले ही वह इसकी आकांक्षा न करे, और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। यह श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश बाय श्रीला प्रभुपाद। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड फुलफिल्स द मटेरियल डिजायर्स ऑफ अ डिवोटी who approaches him with such motives, but he does not bestow benedictions upon the devotee that will cause him to demand more benedictions again. However, the Lord willingly gives the devotee shelter at his own lotus feet, even though such a person does not aspire for it, and that shelter satisfies all his desires. That is the Supreme Personality's special mercy. तात्पर्य हिंदी में श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। पिछले श्लोक में वर्णित भक्तजन भगवान के पास सकाम भाव से पहुँचते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे किस प्रकार उन कामनाओं से अलग रखे जा सकते हैं। जय जय गंधर्विका गिरिधारी श्रीमन महाप्रभु की। इस श्लोक में बताया गया है कि वे किस प्रकार उन कामनाओं से अलग रखे जा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का 2:3-10 का उपदेश है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारद्धि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे भौतिक कामनाओं से मुक्त हो या उनसे पूर्ण अथवा परमात्मा से तदाकार होना मोक्षकामी चाहता हो, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति करे। इससे न केवल भक्त की इच्छाएं पूरी होंगी, वरन एक दिन ऐसा आएगा जब वह भगवान के चरणों कमलों की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहेगा। जो किसी उद्देश्य से भगवान की सेवा करता है वह सकाम भक्त कहलाता है, और जो बिना किसी उद्देश्य से सेवा करता है वह अकाम भक्त कहलाता है। श्री कृष्ण इतना दयालु है कि वे सकाम भक्त को अकाम भक्त बना देते हैं। शुद्ध भक्त अथवा अकाम भक्त जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होती है, वह तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। भगवद गीता 6:22 में इसकी पुष्टि की गई है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहने पर किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। यह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। भगवान सकाम भक्त पर भी इतने दयालु रहते हैं और उसकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करते हैं कि वह एक दिन अकाम भक्त बन जाता है। उदाहरणार्थ, ध्रुव महाराज अपने पिता से भी बढ़कर उत्तम राज्य प्राप्त करने के लिए भक्त बने, किंतु अंत में अकाम भक्त होकर उन्होंने भगवान से कहा, स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, मैं परम संतुष्ट हूँ, मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे किसी सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं है। कभी कभी छोटा बालक गंदी वस्तु को खाने लगता है तो उसके माता पिता उसके मुंह से उस वस्तु को निकालकर उसे संदेश या कोई दूसरी मिठाई खाने को देते हैं। वह भक्त जो भौतिक वर की इच्छा करता है ऐसे ही बालक के तुल्य हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे उसकी समस्त भौतिक कामनाओं को हर प्रकार से सर्वोच्च वर प्रदान करते हैं। अतः भौतिक कामनाओं के लिए श्री भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और अंत में वह श्री भगवान के धाम वापस पहुंच सके। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:37 से 39-41 में इस प्रकार की गई है। अन्य कामी हो सकता है कि भगवान के चरण कमलों की अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की कामना करे, यदि करे कृष्ण भजन, किंतु यदि वह कृष्ण की सेवा में श्री कृष्ण की सेवा में अपने को लगाता है, ना मांगिते कृष्ण तारे देन स्वचरण, उसके न चाहने पर भी श्री कृष्ण उसे अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। कृष्ण कहे, श्री कृष्ण कहते हैं, आमा भजे, वह मेरी सेवा में रत रहे। मागे विषय सुख, तो भी इंद्रिय सुख चाहता है। अमृत छाड़ी विष मागे, ऐसा भक्त उस पुरुष के तुल्य हैं जो अमृत छोड़कर विष की याचना करता है। यही बड़ा मूर्ख, यही उसकी नादानी है। आमी विघ्न, किंतु मैं अनुभवी हूँ। यही मूर्ख है, विषय के न दिब, मैं ऐसे मूर्ख हो भला क्यों कर भौतिक सुख जैसी गंदी वस्तुएं देने लगा। स्वचरणामृत मेरे लिए अच्छा होगा यदि मैं उसे अपने चरण कमलों में शरण दूं।
विषय बुलाइब, मैं ऐसा करूँगा कि वह समस्त भौतिक कामनाओं को भूल जाए। काम लागी कृष्ण भजे, यदि कोई इंद्र तृप्ति के लिए भगवान की सेवा में रत होता है। पाए कृष्ण रसे, उसे अंत में भगवान के चरण कमलों की सेवा का स्वाद मिल जाता है। काम छाड़ी दास है तो यह अभिलाष, वह समस्त कामनाओं छोड़कर भगवान का चिरंतन सेवक बनना चाहता है। हरि बोल। Translation by Srila Prabhupada in English. The devotees mentioned in the previous verse approach the Supreme Personality of Godhead. Previous verse meaning we are reading from the chapter Jambudvip ka Varnan. Now the demigods are requesting, demigods are praying, Lord, that now continuation. In the previous, the devotees mentioned in the previous verse approach the Supreme Personality of Godhead with material motives. But this verse explains how such devotees are saved from those desires. Srimad Bhagavatam 2.3.10 advises, Akama sarva kamo va moksha kama udaradhi tivrena bhakti yogena yajet purusham param. Whether one is freed from all material desires, is full of material desires, or desires to become one with the Supreme, he should engage in devotional service. In this way, not only will the devotee's desires be fulfilled, but the day will come when he will have no other desires than to serve the lotus feet of the Lord. One who engages in the service of the Lord with some motive is called a sakama bhakta, and one who serves the Lord without any motives is called an akam bhakta. Krishna is so merciful that he turns a sakam bhakta into an akam bhakta. A pure devotee, an akam bhakta, who has no material motives, is satisfied simply to serve the Lord, lotus feet of the Lord. This is confirmed in Bhagavad Gita 6.22. Yam labdva cha param labham manyate nadhikam tatah. If one engages in the service of the lotus feet of the Lord, he does not want anything more. This is the highest stage of devotional service. The Lord is so kind even to a sakam bhakta, a motivated devotee, that he satisfies his desires in such a way that one day he becomes an akam bhakta. Dhruv Maharaj, for example, became a bhakta with the motive of getting a better kingdom than that of his father. But finally, he became an akam bhakta and said to the Lord, Swamin kritathosmi varam na yache. My Lord, my dear Lord, I am very satisfied simply to serve your lotus feet. I do not want any material benefits. Sometimes it is found that a small child eats dirty things, but his parents take away the dirty things and offer him a sandesha or some other sweet meat. Devotees who aspire for material benedictions are compared to such children. The Lord is so kind that he takes away their material desires and gives them the highest benediction. Therefore, even for material motives, one should not worship anyone other than the Supreme Personality of Godhead. One must fully engage himself in the devotional service of the Lord, so that all his desires will be fulfilled, and at the end he can go back home to Godhead. This is explained in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22.37, 39 and 41 as follows. Anya Kami, a devotee may desire something other than service to the lotus feet of the Lord. Yadi kare Krishnera bhajana, but if he engages in Lord Krishna's service, na magita Krishna tare dena swacharanam, Krishna gives him shelter at his lotus feet, even though he does not aspire for it. Krishna kahe, the Lord says, Ama bhaje, he is engaged in my service. Mage vishaya sukha, but he wants the benefits of material sense gratification. Amruta chadi vishaya mage. Such a devotee is like a person who asks for poison instead of nectar. Ei bada murkha, that is his foolishness. Ami vigna, but I am experienced. Ei murkhe vishaya ke nadiba. Why should I give such a foolish person the dirty things of material enjoyment? Swa charanamrita, it would be better for me to give him shelter at my lotus feet. Vishaya bhuliba, I shall cause him to forget all material desires. Kama lagi, Krishna bhaje, if one engages in the service of the Lord for sense gratification, Paya Krishna rase, the result is that he ultimately gets a taste for serving the lotus feet of the Lord. Kama chadi, the haite haya abhilashe, he then gives up all material desires and wants to become an eternal servant of the Lord.
Om Agnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshur Unmilatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. We are reading from Chapter 19, Jambudvip Kavan, the explanation of Jambudvip. Here, the demigods are worshipping Lord and he is praying Lord that, Lord, please give us the next birth in Bharat Varsha. भारत वर्ष में हमें फिर से जन्म मिले ऐसा हमें वर दीजिए क्योंकि डेमिगॉड्स जैसे हम प्रभुपाद आगे के श्लोक में बताएंगे कि जैसे स्वर्ग में जाने के लिए कई सारे अनुष्ठान यज्ञ होमा हवन करते हैं यज्ञ पुण्य कर्म अनुष्ठान और वेदाध्ययन करने से स्वर्गलोक में जा सकते हैं और स्वर्गलोक में जाने के बाद में जब भी हमारे पायस एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है व्हेन आवर पायस एक्टिविटीज़ in the Swarglokas are over, then we come back again to this Mrityulok. Shine Punya Martyaloke Vishanti. Shine Punya Martyalokam Vishanti. Jabi pious activities, once the credit of the pious activity gets over, then we have to come back to this world, this Mrityulok, जहाँ पर फिर से हमें जन्म लेना पड़ता है. और प्रभुपाद कहते हैं कि there is no guarantee that we will get next birth, it will be human. There is no way. We can be a cat, dogs, depending on our karma. So Prabhupada says that let us make use of this life and just this life itself, you go back to Godhead. How? That process has been given, Shravanam Kirtanam Vishnu. As His Holiness Jayapataka Swami yesterday said in Chaitanya Charitamrita, he is quoted from Shiksha Ashtakam. Anyone remembers what he quoted yesterday? Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shakti. In the name itself, Lord says that all the energies I have put in the Lord, in the name itself. So if you chant Hare Krishna Mahamantra, then that is enough. And He is so merciful that He said we have to chant only 16 rounds. The other devotees we were translating, if you notice, he said minimum 16 rounds. But His Holiness Jayapataka Maharaj is 16 rounds. All the Maharajas say 16 rounds. But normally devotees are more, they say minimum 16 rounds. But Maharaj specifically he said 16 rounds only. 16 rounds. So just 16 rounds is just concession. If you look at other Gaudiya Math, where Mataji used to come here, she is still coming. She is an old lady. And she was from Gaudiya Math. She has taken initiation in Gaudiya Math. And she was in our Bhakti Vriksha about 10 years ago in this temple. She used to sit here. And she has taken initiation there, so she is chanting 64 rounds. In Gaudiya Math, it's 64 rounds chanting, not less than 64. 64 rounds chant karna padta hai. A whole day, meaning he is chanting. We are, 16 rounds itself, we are tired, meaning we don't have enough time, or maybe we have so many other things to do, material activities, particularly for householders, or people staying outside. So it is a big concession that Prabhupada has given to us just to chant 16 rounds. That should be enough for us to go back home if we surrender to Him, surrender to Guru and Krishna. So in this shloka, it is explained that even if a devotee has a material desire, sometimes it happens, or in the beginning itself, when the devotee has some desires, he should come to Krishna and ask for the desires to be fulfilled. So what he will do is,
as example is given here, that small child wants to eat some dirty things, because small child has tendency to put everything what is there on the floor or what is found on the table or something, put in the mouth. And the child does not have any knowledge that what is good and what is not good. So he will simply put whatever is there, he will simply put in the mouth. So, and the parents, because they have a knowledge, so they will remove that and give him some sweet, lollipop or something, some sweet. The example given is sandesh, because Prabhupada likes sandesh, sweet. So the sandesh meaning some rasgulla or something, that kind of. He puts in the mouth of a child, so that the child remove dirty things and put the nectar or the sweet thing inside the mouth. Similar example given here is that the Sakam Bhakti, Sakam Bhakta, those who have some desires to be fulfilled, they go to Krishna, and Krishna fulfills the desires in such a way that he does not ask for any more material desires, benedictions. He does not expect anything in anything like material. So he gives him, the example given here is from Chaitanya Charitamrita, Anya Kami. (27) 5:19. Yes, I have. Example here from quoted from Chaitanya Charitamrita, Prabhupada is given here. Word by word translation also is given. Anya Kami, a devotee may desire something other than service to the lotus feet of the Lord. Yadi kare Krishna bhajan. If the person who has some desires, he worship Lord Krishna, na magite Krishna tare dena swacharan. Even if he does not ask for any swacharan, means he is not asking for pure devotional service, but Lord Krishna wants to give his swacharan. Krishna gives him shelter at his lotus feet. Even though he does not aspire for it, even though the Sakam Bhakta, he desires, he wants his material desires to be fulfilled, he worshipping Lord Krishna, then also Lord Krishna gives him the shelter of his lotus feet. Ama Bhaje, he is engaged in my service. Mage Vishaya Sukha, he is worshipping, Lord Krishna is saying, he is worshipping me, and he is asking for, worshipping me, asking for the material desires. But he wants the benefits of material sense. Amrita Chadi Vishamange. The Sakam Bhakti is asking for poison. Such devotee is like a person who asks for poison instead of nectar. Ei Bada Murkha, he is very foolish. Ami Vignana, but Lord says, I have knowledge. That is but I have experience. I have a knowledge and experience. Ei Murkhe Vishaya Kena Diba. Through this foolish man, why should I fulfill his desires? I should give him the nectar. Swacharanamrita, if it would be better for me to give him shelter at my lotus feet. So even if material desires, person who is expecting some material desires, which is called Sakam Bhakta, he worships Lord Krishna, then Lord Krishna will put him in the shelter and he will fulfill his desires in such a way that he does not ask for any more material benefits. Prabhupada says that in all circumstances we should worship Lord Krishna. Sometimes we get confused that Krishna, because in South India it is said that Krishna fulfills only the spiritual desires or the transcendental desires that you want, not material desires. So for material desires we should go to some other god, goddess is something. But here it is explained that we should worship Krishna only at Prabhupada says. So we should not be tempted by the other Devi Devatas around to fulfill others' desires other than catching hold of the Krishna through the Guru Parampara. It is also explained in the previous slokas that the birth here in Indian Bharat Varsha, Bharat Bhumi ta haila manushya janma yar, janma sarthak kari karo paro upkar. भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य को कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अतः जो पहले ही भारतवर्ष में जन्म ले चुके हैं उनका कर्तव्य है कि वे शास्त्रों तथा गुरु की शिक्षा ग्रहण करें तथा कृष्ण भावनामृत से पूर्णतया परिचित होने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा का लाभ उठाएं।
So it's explained here that we should, through the medium of Guru Parampara, Srila Prabhupada, we should worship Lord Krishna for anything that we desire. Even if it is a material desires, we should worship Krishna only. कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं वो भगवान कृष्ण पूर्ण करते हैं. पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा था कि जो देवी देवताओं के पास जाते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है दुर्गा देवी या शिव भगवान या इंद्र चंद्र, वैसे 2 श्लोकों को पहले दिया हुआ है कि जो देवी देवताओं के पास वर मांगने जाते हैं भौतिक इच्छाओं के लिए, उनकी पूर्ति भगवान कृष्ण के माध्यम से ही करते हैं वो, क्योंकि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज, बिकॉज दिस आर डिवोटीज ऑफ, all the Devi Devatas are devotees of Lord Krishna. So they fulfill desires through Lord Krishna, meaning Lord Krishna only fulfills the desires, but भगवद गीता में लिखा गया है कि वो सही तरह से नहीं है. अविधिपूर्वकम, विधिपूर्वक है भगवान कृष्ण की पूजा करना, अविधिपूर्वक है अन्य देव देवताओं की पूजा करने से हमारे वांछित फल मिलते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही है देवी देवताओं की भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए है. तो हमें प्रभुपाद यहाँ पर अलर्ट करते हैं, सचेत करते हैं कि हम भगवान कृष्ण के पास ही जाएं, चाहे हमें भौतिक इच्छा है या नहीं है. तो ये शुरुआत में हो सकता है. प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि कृष्ण भक्त हमेशा निष्काम रहता है, तो फिर भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है गुरु के मार्गदर्शन से, और कृष्ण कृपा से हम भगवान के पास जा सकते हैं. क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि यहाँ पर देवी देवता भगवान से पूजा प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में ही जन्म मिले, ऐसा हमें वर दें, क्योंकि भारतवर्ष में से ही यहाँ पर भगवत धाम वापस जाया जा सकता है. मृत्यु लोक से, स्वर्ग लोक से यहाँ पर आके फिर यहाँ पर अगर मनुष्य जन्म मिला तभी भगवान की भक्ति करके स्वधाम मतलब कृष्ण वैकुंठ प्लेनेट या गोलक प्लेनेट जा सकते हैं. उसके अलावा कोई और चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है. इसका कुछ प्रश्न है प्रभु? एनी क्वेश्चन प्रभु? Prabhupada has explained everything in this shloka and the previous shlokas. So this shloka is everything. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, everything is there in this shloka. Just this shloka itself is enough to go back home, back to Godhead. Prabhu? Yes. Meaning, for the material desires, particularly for new devotees or those who are not, because in India there is a confusion, so many gods. People, Prabhupada preached in Western countries, there because there is no confusion. So Prabhupada said that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, so everyone believes Krishna, and they go to Krishna only for everything. Whether there is material desires or spiritual activities or pure devotional service. But in India there is a confusion. There are so many temples. This temple itself, with so many devatas. So people go here, there, everywhere. So for them, for those kind of people, or the sakam bhaktis, or those who are ignorant people, people don't know that who is the Supreme Personality of God. They say Krishna is also a God, Vishnu is also God, Shiva is also God, Durga also a God, Sai Baba also is a God. So they believe like that. So then they go to different, they go to everywhere, supermarket, like they go to all demigods, or everyone, including Krishna. So in Indian temples particularly, those who do not have any idea, they have plenty of so many Devi Devatas in the temple. I have seen one temple where they have hundreds Devata, including Lord Krishna, Shiva, Durga, all. They worship everything. So all the, including Sai Baba and all of them. So those people don't have knowledge. But if they come to Krishna and ask for the material benediction, material desires, then Krishna fulfills the desires in such a way that they don't have any more material desires. So example given here is the child, small child. He puts everything in the mouth. So small child is compared to the ignorant bhaktas or ignorant people who don't know who is the Supreme Personality of Godhead and what he should ask Lord Krishna.
So they put whatever there in the mouth. Here the example given, dirty things. Whatever is there on the floor or something, they put in the mouth. And the parent, because they know what is good for them. So they remove that dirty things and put some sweet. Prabhupada example given is sandesh or some other sweet. So similarly Krishna removes their material desires or any other desires that they have, and give them swacharan, as explained in Chaitanya Charitamrita. न मागे थे कृष्ण तारे देन स्वचरण, उसके न चाहने पर भी श्री कृष्ण उसे अपने चरण कमलों की शरण में देते हैं. बिकॉज लॉर्ड कृष्णा सेज आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विषम मागे ए बड़ मूर्ख. दे आर सो फुलिश दैट दे आर आस्किंग फॉर मटेरियल बेनेडिक्शन. बट लॉर्ड कृष्णा सेज आमी विघ्न ए मूर्खे विषय केने दिब. आई नो दिस फुलिश पर्सन, हाउ कैन आई गिव द मटेरियल बेनेडिक्शन. स्वचरणामृत विषय बुलाइबा, ही विल मेक अ, मैं ऐसा करूँगा कि ही विल डू सच अ थिंग दैट ही विल फॉरगेट अबाउट द मटेरियल डिजायर्स. काम लागी कृष्ण बजे पाए कृष्ण रसे, देन ही विल गेट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण. कुछ और प्रश्न है प्रभु? माता जी प्रश्न है कुछ? The process, as explained by His Holiness Jayapatra Swami Maharaj, is keep chanting continuously. It is not that Prabhupada himself says in Tatparya, in purport, it is kramashah, gradually it will happen. So, meaning determination is required, that you keep doing your 16 rounds, 4 regulative principles, and attending, if possible, Mangalarti programs, and Srimad Bhagavatam class, Nityam Bhagavata Sevaya, every day. Then this gradually our heart will become cleansed, and then Lord, by the mercy of Srila Prabhupada and Shri Krishna, then the Krishna's name will manifest in our heart. Then we'll one day we become pure devotee. As Jayapatra Swami Maharaj said, I want to become pure devotee one day. His past YouTube short is there. I want to become a pure devotee one day. So our aim should also be that. We want to become pure devotee one day. That one day will come someday. If we keep doing, if we have determination of chanting 16 rounds and doing 4 regulative principles, then and worshipping the Srila Prabhupada, Guru Parampara, then their mercy will flow to us. कुछ प्रश्न है प्रभु? श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे.